Okay. So let's start lecture 2, IUPAC nomenclature. So what we did in lecture 1 was we were understanding about hydrocarbon groups. In this, I started explaining Ali's acyclic hydrocarbon groups. Which have 3 types, and in this I started explaining you alkyl group. और alkyl group के totally 5 types है: normal alkyl, sec alkyl, tertiary alkyl, isoalkyl, and neoalkyl. Okay, in that I've already finished teaching you last lecture normal alkyl, sec alkyl, and normal alkyl, sec alkyl, and tertiary alkyl, and I'll start explaining you now with isoalkyl. So let us start understanding what is isoalkyl. So this is where we are. So fourth type of alkyl group आज हम समझेंगे, जिसको कहते हैं isoalkyl. So what is a isoalkyl? Isoalkyl में दो conditions हमको देखने हैं. Okay, it is an alkyl group which will have on one end, one terminal CH2 group. तो iso group होता है an alkyl group containing CH2 on one terminal end and CH3, CH, CH3. ये मेन फ्रेमवर्क होता है CH3, CH, CH3 on other end. And with no other branch. Okay, so let us understand this कि ये क्या है. एक एंड दूसरा एंड, ये जो भी मैंने लिखा है इसका मतलब. तो एक एंड पे मुझे CH3, CH, CH3 ग्रुप चाहिए और दूसरे एंड पे CH2 चाहिए. अगर ये दो को मैं जोड़ देती हूँ, दो कंडीशंस को हमने जोड़ दिया, तो व्हाट वी गेट इज दिस, एंड दिस इज 4 कार्बन आइसो ग्रुप, आइसोब्यूटाइल ग्रुप. ना इसके आगे के आइसो में क्या करना है, ये जो दो ग्रुप्स है उनके बीच में हम कार्बन बढ़ा सकते हैं और फिर ये हो जाता है आइसोपेंटाइल ग्रुप. और कार्बन बढ़ा दिए तो ये हो जाता है आइसोहेक्साइल and so on. So the two things that I have explained you here, एक एंड पे चाहिए CH2 और दूसरे एंड पे चाहिए ये. इस हर एक कंपाउंड में आप देखोगे एक एंड पे ये ग्रुप है और दूसरे एंड पे ये ग्रुप है और इसके बीच में
कोई भी ब्रांचिंग हमको नहीं चाहिए, then it is called as iso group. So is iso clear to everybody? Okay, और इसका obviously representation है iso alkyl कि इसको हम in general कहते हैं iso alkyl. General representation of this group is iso alkyl. So is iso group clear to everybody? I'm discussing the last type of alkyl group. Alkyl group का अभी हम last type पढ़ेंगे और वो है neo alkyl group, fifth type. So what is a neo alkyl group? Again, neo alkyl group में same an alkyl group containing CH2 on one end या one terminal, and ये जो दूसरा ग्रुप है ना, ये अभी नियो में अलग है. This is where the difference comes between iso and this group. Okay, जिसमें ये कार्बन क्वाटरनरी बन जाएगा. This on other end. With no other bonds. Okay, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा न्यूअल. So let us construct the new. So one end I need this group, and another end I need this group. And when I join the two, I get the first neo. तो नियो फ्रेमवर्क के लिए मिनिमम मुझे कितने कार्बन चाहिए? 5. और ये जो नियो ग्रुप है, ये इसका नेम है नियो पेंटाइल ग्रुप. And further neo will be, I will be simply increasing the number of carbons in between. तो in between के कार्बन्स बढ़ते जाएंगे और ये हो जाएगा नियो हेक्साइल ग्रुप and so on. Okay, so iso and neo, I've given you both. Please copy this and we go ahead.
इसमें भी आप देख सकते हो ये जो दो चीजें मैंने यहाँ पे बताई थी कि एक एंड पे CH2 चाहिए और एक एंड पे ये वाला ग्रुप चाहिए, which you can see in the molecule. One end has this group, one end has CH2, and with no other branching in between. Okay, इसको ही आप क्या कहते हैं? Now, before I go ahead with the second type of alicyclic, second type of acyclic में जो second type है alkynyl, वो start करने से पहले मैं एक आइसो अल्काइल का एक्सेप्शन बता दूं, something that doesn't fit in iso alkyl's definition, but still called as iso, and that group is this. ये जो ग्रुप है इसमें पॉइंट ऑफ अटैचमेंट सेकेंडरी है. I've removed a hydrogen from secondary carbon in a straight carbon chain. तो इसको सेट प्रोपाइल कहते हैं, बट इसको आइसोप्रोपाइल भी कहते हैं. And this is the exception to iso rule. This is not fitting in iso rule. इसमें एक एंड पे ये वाला ग्रुप तो है बट दूसरे एंड पे CH2 नहीं. तो आइसो रूल में जो फिट करता है वो मिनिमम कार्बन नंबर 4 से स्टार्ट होगा. ओके, बट स्टिल द प्रोपाइल ग्रुप व्हिच इज सेट प्रोपाइल is commonly named as isopropyl also. So the only iso which is not fitting in this definition is isopropyl. Okay, so let us go ahead now with second type of hydrocarbon group. ये अल्काइल हो गया, अभी हम देखेंगे अल्किनाइल ग्रुप. What is the alkynyl group? A hydrocarbon group containing carbon-carbon double bond. तो अगर हाइड्रोकार्बन ग्रुप में कार्बन-कार्बन डबल बॉन्ड है तो उसको अल्किनाइल ग्रुप कहते हैं. कैसे बनेगा? We will start with alkene and remove one hydrogen. Okay, so I'm starting with ethene, which is CH2, double bond CH2, and I've removed one hydrogen. And now this alkynyl group is commonly known as vinyl group. I'm starting with propene, which is CH3, CH, double bond, CH2 is propene. But मैं टर्मिनल कार्बन से, प्रोपीन के टर्मिनल कार्बन से मैंने एक H को हटा दिया, तो ये हो गया. तो ये ग्रुप कौन सा हो गया? अभी देखो आप, CH3, CH, डबल बॉन्ड CH. ओके, तो ये हो गया प्रोपीनाइल ग्रुप. इसको कहते हैं प्रोपीनाइल ग्रुप. अब ये जो डबल बॉन्ड है उसकी पोजीशन शिफ्ट करके 3 कार्बन में और 1-2 मुझे क्या आएंगे? अल्किनाइल ग्रुप्स. तो मैं वो पोजीशन शिफ्ट करके आपको बता रही हूँ और उनके कॉमन नेम्स भी बता रही हूँ. So if that position I'm shifting here, so it becomes CH2,
double bond CH, and then CH2. So if it is this way, then this is your allyl group. इस ग्रुप को कहते हैं allyl group. और अगर ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट जो प्राइमरी कार्बन पे है ये हटा के अगर मिडिल वाले कार्बन पे मैं लेके आऊं तो प्रोपिनाइल से आपको मिल जाएगा आइसोप्रोपिनाइल. So what is isopropanol? CH3C double bond CH2 and a point of attachment coming here. So this group is isopropanol. ऐसे ही यहाँ पे जो CH2 डबल बॉन्ड CH है, अगर ये डबल बॉन्ड हम पॉइंट ऑफ अटैचमेंट पे लेके आए तो उसको कहते हैं इथिलिडीन. So two carbons but attaching to main framework via double bond. So this is your ethylidene. Say 3 carbons attaching to main framework via double bond आ गया तो ये हो जाता है प्रोपाइलिडीन. Right, so these are some examples of alkynyl group. तो finally alkynyl group में क्या दिख रहा है हमको? It's a hydrocarbon group containing a double bond. ये आइसोप्रोपाइलिडीन भी ग्रुप हम कर सकते हैं जहाँ पे पॉइंट ऑफ अटैचमेंट डबल बॉन्ड होगा तो मैं आइसोप्रोपाइलिडीन ग्रुप भी करता हूँ. So this is CH3C CH3 and attached to the framework via double bond. So this is your isopropylidene. Right? So these are your alkynyl group. So copy this and I'll explain you the next category, alkynyl group. So let us understand what are alkynyl group. तो alkynyl group क्या होता है? A hydrocarbon group containing carbon-carbon triple bond.
तो से फॉर एग्जांपल ये हो गया इथाइनिल ग्रुप. So group that is containing carbon carbon triple bond. ऐसे ही प्रोपाइनिल ग्रुप होगा 3 कार्बन वाला. और इसकी पोजीशन हम चेंज कर सकते हैं. सो दिस इज द ट्रिपल बॉन्ड इज एट कार्बन नंबर 1. उसको अगर मैंने चेंज कर दिया, ओके, तो ग्रुप चेंज हो जाएगा. कार्बन नंबर 1 से मैं कार्बन नंबर 2 पे चेंज कर देती हूँ, तो उसको 2 प्रोपाइनिल या प्रोपायरगिल कहते हैं. And we can call this as 2-propionyl group also. So these are the hydrocarbon groups. कैसे बने ये? We start with alkyne and we are removing from alkyne कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाले अल्काइन से स्टार्ट करके हमने एक हाइड्रोजन को हटा दिया है. एंड द रिमेनिंग ग्रुप इज कॉल्ड अल्काइनिल ग्रुप. So what we finished is हाइड्रोकार्बन ग्रुप में मैंने असाइक्लिक हाइड्रोकार्बन ग्रुप्स को आपको एक्सप्लेन कर दिया. Now let us go for second type, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन ग्रुप. तो हाइड्रोकार्बन ग्रुप का अभी हम सेकेंड टाइप करेंगे और वो है एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन ग्रुप. असाइक्लिक हो गया, अभी एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन. So in the classification, first lecture, I have taught you what are alicyclic compound. तो बस हमको removal of hydrogen atom from a ring carbon करना है. alicyclic compound के कार्बन एटम से हाइड्रोजन को निकालना है. तो remove hydrogen atom from a alicyclic carbon. एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन ग्रुप आपको मिलेगा बाय रिमूविंग हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एलिसाइक्लिक कार्बन, रिंग वाला कार्बन, and then that compound will be called as alicyclic hydrocarbon. तो say for example, मैंने आपको एलिसाइक्लिक का एग्जांपल साइक्लोप्रोपेन दिया था. तो ये साइक्लोप्रोपेन के रिंग वाले कार्बन से, ये रिंग वाला कार्बन है, इससे मैंने एक हाइड्रोजन को हटा दिया. एंड नाउ दिस ग्रुप दैट आई गेट इज साइक्लोप्रोपाइन ग्रुप. या 4 कार्बन इस साइक्लोब्यूटेन. ये 4 कार्बन में से कहीं से भी आप एक हाइड्रोजन को हटा दो. एंड नाउ द ग्रुप दैट यू गेट इज साइक्लोब्यूटाइल ग्रुप. दिस इज एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन ग्रुप एंड सो ऑन. हर बार सिंगल बॉन्ड होना जरूरी नहीं है, डबल बॉन्ड भी हो सकता है. तो साइक्लोब्यूटाइल के जगह पे साइक्लोब्यूटीन आइल भी हो सकता है, राइट.
So if I am placing a double bond now between these two carbons, so when I am placing double bond between these two carbons and removing the H say from here, तो ये अभी साइक्लोब्यूटेन नहीं है, ये साइक्लोब्यूटीन का डेरिवेटिव है. So I'll name this as cyclobutenine. Okay, so these are some examples of alicyclic hydrocarbon. Okay, so itna likh lo. Then I will give you next part, that is aromatic hydrocarbon group, जिसमें हम सिर्फ बेंजोनॉइड डिस्कस करेंगे. So you get aromatic hydrocarbon group by removing one or more hydrogen atoms from aromatic hydrocarbon. तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से अगर हम एक या उससे ज्यादा हाइड्रोजन को निकालते हैं, तो व्हाट यू गेट इज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ग्रुप. तो let us start with benzene. So benzene is C6H6, right? So I just remove one H from here. And then this is called as phenyl group. The phenyl is C6H5. One hydrogen less, one hydrogen is removed from benzene ring. Now, if I am removing two hydrogens from benzene ring, it is called phenyl. And based on the position, कौन से वाले दो हाइड्रोजन निकाले. So if they are one to each other, next to each other, this is called orthophenyl. If it is 1,3 to each other, this is called metaphenyl. If it is 4 to each other, so hydrogen removed are onto neighboring carbon, बाजू वाले कार्बन पे. 1,2 का मतलब है neighboring, तो इसको ऑर्थो पोजीशन कहते हैं. 1,3 means एक छोड़ के, इसको मेटा पोजीशन कहते हैं. और 1,4 means between the two there will be two carbons, इसको पैरा पोजीशन कहते हैं. ये है पैराफिनाइल. Okay, then I can have derivative of benzene.
ये है टोल्यूइन। अभी टोल्यूइन के ये रिमेनिंग में से किसी भी एक कार्बन से अगर हाइड्रोजन निकाल दिया, इस पोजीशन से निकाल दिया, ये फिर से ऑर्थो आ जाएगा, बट अभी टोलाई, क्योंकि टोल्यूइन के ऑर्थो पोजीशन में है, तो ये ऑर्थोटोलाई ग्रुप है। फिर अगर ये 1,2 के जगह पे 1,3 कर दूंगी तो ये मेटाटोलाइल हो जाएगा, और 1,4 कर देंगे तो पैराटोलाइल हो जाएगा। If I remove this hydrogen, one of the hydrogen of CH3 group, then I get this group, and this is called as benzyl. If I remove 2 hydrogens from that CH3 group, फिर ये जो ग्रुप है इसको बेंजाल कहते हैं, ZA है। And if I remove all the 3 hydrogens that we see in toluene, then this group is called benzo. Okay. So these are some aromatic hydrocarbon groups. So please copy them, then I'll go ahead. So what we have finished is, we have finished discussing aromatic hydrocarbon groups, and that finishes the total discussion of hydrocarbon groups also. Okay, so I'm clearing the board, and we will actually understand now more about IUPAC nomenclature of organic compounds.
So let us understand few basic things about IUPAC name. किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जब भी हम IUPAC नेम लिखते हैं तो इस नेम के मेनली 3 पार्ट्स होते हैं. There are 3 parts of IUPAC. So I'm explaining you what are these 3 parts. Let us start with the first part. ये जो फर्स्ट पार्ट है किसी भी IUPAC नेम का, इसको कहते हैं वर्ड रूट. How do I get word root? I get word root by counting number of carbons present in longest carbon chain. So as we go ahead, I will teach you how to understand longest carbon chain and how to count carbons in longest carbon chain. But word root will tell you, denote number of carbon atoms in longest carbon chain. तो word root से आ जाता है, ये डिनोट करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन लॉन्गेस्ट कार्बन. And then we will go ahead. तो अभी सिंपल सा एग्जांपल ले रही हूँ इसको एक्सप्लेन करने के लिए. सपोज आई एम हैविंग दिस कंपाउंड. तो इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यही है जो दिख रही है 1 2 3 4. This is my longest carbon chain, 4 carbon chain, and for 4 number there will be a word root. So there is a word root for every number. What is that? If you are having 1 carbon in your longest carbon chain, your word root is with. If there are 2 carbons in longest carbon chain, it is it. If there are 3 carbons in longest carbon chain, it is from. If there are 4 carbons in longest carbon chain, it is you. If there are 5 carbons in longest carbon chain, it is pent. And your notes or any standard book will give you this table of word root. तो हमको word root मिलता है by counting number of carbons in longest carbon chain. So for this compound that I have written on the board, there are 4 carbons. So what will be the word root to name this? But. तो इस कंपाउंड का जो नेम होगा IUPAC उसका हमको क्या आ गया? वर्ड रूट आ गया और जो के ब्यूट है ना. वर्ड रूट के बाद में भी कुछ लिखा जाता है IUPAC नेम में और वर्ड रूट के पहले भी कुछ लिखा जाता है. So whatever we write before word root obviously is prefix. And whatever we are writing after word root is suffix. So let us understand prefix and let us understand suffix. तो suffix क्या हो सकता है? Suffix में usually we write about the functional group present. तो जो functional groups है हम उनको explain करते हैं suffix में. Suffix are the main place where we will be talking about functional group. And suffix को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है. So suffix is divided into 2 categories. There is a primary suffix and there is a secondary suffix.
आई विल एक्सप्लेन यू द डिफरेंस, कहाँ पे फंक्शनल ग्रुप आता है और कहाँ पे नहीं. So primary suffix and secondary suffix. तो प्राइमरी सफिक्स क्या इंडिकेट करता है? प्राइमरी सफिक्स ये जो कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है इसमें नेचर ऑफ बॉन्डिंग को इंडिकेट करता है. इंडिकेट्स नेचर ऑफ कार्बन चेन. So I'll explain you what is it. The primary suffix will always indicate nature of carbon chain. So, अगर आपके कार्बन चेन में एवरीवेयर देयर इज सिंगल बॉन्ड, कार्बन चेन में अगर हर जगह पे सिंगल बॉन्ड है तो हमको प्राइमरी सफिक्स लिखना पड़ेगा ए. इफ वी सी अ डबल बॉन्ड तो हमको डबल बॉन्ड की पोजीशन किसी नंबर से लिखनी पड़ती है, बट उसके आगे प्राइमरी सफिक्स आएगा ई. एंड इफ वी सी अ ट्रिपल बॉन्ड then again the position is indicated by number but primary suffix comes ein. तो primary suffix in ein है. As we go ahead I'll do more detailing of it. Secondary suffix क्या है? Secondary suffix is the functional. This indicates functional. ये फंक्शनल ग्रुप इंडिकेट करता है. इसका मतलब हर फंक्शनल ग्रुप के लिए IUPAC ने एक सेकेंडरी सफिक्स फिक्स किया है. ओके, सो व्हाट इज इट? अगर फंक्शनल ग्रुप OH है तो उसका सेकेंडरी सफिक्स ऑल है. अगर फंक्शनल ग्रुप्स, आई एम गिविंग यू फ्यू एग्जांपल्स and any standard book you will have a complete list. अगर फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड है तो उसका सेकेंडरी सफिक्स अल है. अगर फंक्शनल ग्रुप आपका साइनाइड है तो उसका सेकेंडरी सफिक्स नाइट्राइल है. So this is, I gave you some idea about what can be the suffix. Suffix is that what comes after word. तो ये जो एक कंपाउंड मैंने बोर्ड पे लेके रखा था इसको भी नेम करने की कोशिश करते हैं. इसमें वर्ड रूट आएगा बाय काउंटिंग द कार्बन्स इन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन. तो इसका वर्ड रूट हो गया ब्यूट. ब्यूट के आगे इसका जो सफिक्स है प्राइमरी सफिक्स, क्योंकि एवरीवेयर सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट, आई विल राइट द प्राइमरी सफिक्स ए and there is no functional group other than alkane. So the name of this compound is butane. Now see, I'll take one more example where I actually take a functional. So I'm taking OH as a functional. And let me try to name this. तो अभी जो longest carbon chain है उसमें 4 कार्बन है. तो वर्ड रूट आ गया ब्यूट और उसके आगे कार्बन फ्रेमवर्क में एवरीवेयर सिंगल बॉन्ड है तो ये आ गया ब्यूटेन. अभी हमको क्या करना है, नंबरिंग के रूल्स भी हम सीख जाएंगे, बट हमको फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन नंबर से इंडिकेट करनी है एंड वी ट्राई टू गिव लोअर नंबर टू फंक्शनल ग्रुप. आई विल डू द डिटेलिंग लेटर. तो OH की पोजीशन को नंबर आ जाता है 2 and then this is what is my secondary suffix butane 2-ol. अभी और एक when I am writing two suffixes primary and secondary back to back and if this E is followed by a vowel here A, E,
I, O, U here. While writing back-to-back suffixes, we cut this E. तो ये E हमको हटा देना है. अगर इसके आगे आपको क्या दिखे, वॉवल दिखे, तो A, E, I, O, U and here Y2. तो A, E, I, O, U and Y, इसमें से कुछ भी प्राइमरी सफिक्स के आगे बैक टू बैक आ रहा है, तो जो प्राइमरी सफिक्स का एंडिंग ई होता है, तो आप देखोगे सारे प्राइमरी सफिक्स ई से एंड करते हैं. तो ये जो प्राइमरी सफिक्स का एंडिंग ई होता है, ये हम निकाल देंगे. Okay, that's what is the IUPAC rule. Is that clear to you? So I explained you word root and I explained you suffix. Now what next? We will understand prefix. तो prefix के भी दो टाइप है. There are two types of prefix. जो word root के immediately आगे होता है, इसको कहते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स, and the name begins with secondary. So actually कोई भी अगर नेम हमको IUPAC में करना है, तो उसके 5 पार्ट हो सकते हैं. That doesn't mean every compound will have these 5 parts. But if a particular compound has all the 5 parts, then it will start with a secondary prefix, then next is primary prefix, then is word root, then is primary suffix, and what will come at the end is secondary suffix, this way. Okay, and in this sequence. So let me make you understand what is a primary prefix and what is a secondary prefix. तो आपका जो primary prefix होता है, this is only applicable for cyclic compound. Only for cyclic compound होता है. और ये होता है cyclo. So we'll give you an example of this. Okay, I'm taking this compound, a cyclic compound. तो अभी cyclic compound में मेरा word root कैसे आएगा? यहाँ पे मुझे number of carbons कितने हैं, but forming a ring. ये ring के number of carbons कितने हैं, and that will be my word root. So how many carbons I'm having in this ring? 5. तो इसका word root हो गया 5. Pent. अभी pent के बाद में जो प्राइमरी सफिक्स आता है, उस प्राइमरी सफिक्स में आप ध्यान दो, everywhere in the ring there is a single bond, and that's the reason the primary suffix comes A. There is no special functional group here. यहाँ पे कोई भी special functional group नहीं है, तो प्राइमरी सफिक्स के आगे secondary suffix नहीं आएगा. Now let us talk about prefix. इस कंपाउंड का प्राइमरी प्रीफिक्स है साइक्लो, एज दिस इज अ साइक्लिक कंपाउंड. तो इस कंपाउंड का नेम बन जाएगा साइक्लोपेंटेन, जिसमें we started with a primary prefix, a word root and a primary suffix. 3 parts were only there. Is that clear to you? Now see, what can be your secondary prefix? Secondary prefix are the substituents. तो अगर longest carbon chain पे कोई substituent है, तो उसको हम mainly as secondary prefix लिखते हैं. तो there are substituents on carbon chain which are written as a prefix, and when there are more than one substituent on carbon chain, then we will try to write it in the alphabetical order. हम alphabetical order में उसको लिखेंगे. तो substituents जो होते हैं, okay, उनको हम as a secondary prefix लिखेंगे. Say for example, अभी मैं एक छोटा सा example substituents के बारे में. So I'm taking this compound
जिसके इस कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट है, एक ब्रांच है। तो अगेन आई विल स्टार्ट by counting the carbons and numbering. This has 4 carbons, so word root is bute, primary suffix is A, and it has a branch which I write before this, and the branch is at carbon number 2. The name of this will be 2-methyl butane. So everybody understood how are we using primary and secondary prefixes. So I will take a compound जिसमें ये पांचों 5 पार्ट आ जाए. एक कंपाउंड ऐसे ले लेते हैं जिसमें सब कुछ है. तो ध्यान दो. I am taking a 6-membered alicyclic compound जिसमें OH है, तो फंक्शनल ग्रुप आ गया, तो सेकेंडरी तुम्हारा सफिक्स आ गया, और जिसमें मैंने एक सब्स्टिट्यूएंट भी डाल दिया तो सेकेंडरी प्रीफिक्स भी आ गया. Now, when I'll name this compound, it will have all the 5 components of IUPAC. So I always will find first word root. तो ये 6 मेंबर्ड की रेंज है और इसके लिए इसका वर्ड रूट हो जाएगा X. उसके आगे everywhere a single bond, so it will be hex A. ये मैंने लिख दिया प्राइमरी सफिक्स. उसके आगे नंबरिंग, फंक्शनल ग्रुप को लोअर नंबर देना होता है, और ये फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है जिसके लिए हम नंबर 1 पे ON लिखेंगे, मतलब नंबर 1 पोजीशन पे अल्कोहल, because there is a vowel this goes. Now what is remaining? I still have to write about this methyl group. So the name begins with 2-methyl. So the name is 2-methyl hexane 1-O, and this has what I forgot. I wrote the primary secondary prefix, but I forgot the primary. तो इसका प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होगा? हेक्सेन के पहले साइड. तो इसका टोटल नेम हो जाएगा, आई स्टार्ट विद अ सेकेंडरी प्रीफिक्स दैट इज 2-methyl, एंड देन अ प्राइमरी प्रीफिक्स दैट इज cyclo, then a word root, then a primary suffix, and then a secondary suffix. So this way, this is a basic sequence. अभी मैंने ये पूरे डिस्कशन में एक आपको बेसिक सीक्वेंस थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश की. इसका बहुत ज्यादा डिटेलिंग हम करेंगे जैसे हम आगे जाएं. ये जो सेकेंडरी प्रीफिक्स मैंने यहाँ पे लिखा है, इसके लिए सब्स्टिट्यूएंट है और कुछ स्पेशल फंक्शनल ग्रुप्स भी है जिनको हम एज सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखते हैं. तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट ऑन कार्बन चेन एंड सम स्पेशल फंक्शनल ग्रुप्स. जो हमेशा हमको कैसे लिखने हैं, जो हमेशा हमको एज अ सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखने हैं. तो ये कौन से फंक्शनल ग्रुप्स है? हैलोजन, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो, नाइट्रो, नाइट्रोसो और ईथर का अल्कोक्सी. These are some special functional groups which we won't be writing as secondary suffix. तो ये हम secondary suffix में नहीं लिखते. ये हम हमेशा कहाँ पे लिखेंगे? We will try to write these special functional groups as prefix. Now, what I'm not giving you are tables. So which table I didn't give you? There is a table available in any standard book for word root. तो किसी भी standard book में एक word root का table है. आपको कैसे मिलता है word root? By counting carbon in number of longest carbon chain के कार्बन को आपको गिनना है. साइक्लिक कंपाउंड होगा तो वर्ड रूट के लिए आपको टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स इन द रिंग को गिनना.
You will get one table for wood. There is a table for primary suffix also, which I have given. And there is a big table क्योंकि functional group इतने तीन नहीं है, functional group तो बहुत सारे हैं. तो ये सारे functional groups का secondary suffix क्या होता है, इसका भी एक टेबल आपको किसी भी standard book में मिल जाएगा. I will discuss these suffixes when I'm individually teaching you how to name a particular functional group, but I won't be giving any table. और prefixes में ये जो secondary prefix के special functional groups है, इसका भी टेबल किसी भी standard book में मिल जाएगा. ठीक है, तो ये टेबल्स में नहीं दे रहे, बट आगे चल के ये सबका डिटेलिंग हम करेंगे. टेबल्स के लिए नोट्स या किसी भी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक को रिफर कीजिए. तो इतना कॉपी कीजिए. देन आई स्टार्ट डिस्कसिंग IUPAC रूल्स फॉर नेमिंग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. हम अल्केन के नॉमेनक्लेचर से स्टार्ट करेंगे. So let us start understanding IUPAC rules for naming saturated hydrocarbon, that is alkane.
So let us understand the rules one after another. So I'm taking a compound and we will try to name it. And in doing that, I'm changing my marker. In doing that, we will gradually understand the rules for naming. So see this? So I've taken this compound. This is a saturated compound that I've taken. Now what is the first thing that we have to do when we have to name a compound? Is we have to go for finding longest possible carbon chain. And the chain should be continuous. The first rule is select the longest possible carbon chain. A longest continuous ये करना है अभी तो हम इस कंपाउंड में लॉन्गेस्ट पॉसिबल कंटिन्यूअस कार्बन चेन को फाइंड करने की कोशिश करते हैं. If I start from here and if I say this is my longest chain, is it right? Let us count. 1, 2, 3, 4, 5. But if I start from here and if I go till here, how many carbons I get? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 7 carbon chain is the longest. Then a 5 carbon chain. तो जो भी compound है उसमें सबसे पहले हमको क्या करना है? एक longest possible carbon chain को ढूंढना. So for this compound, this is my longest possible carbon chain. Now, are all the carbons of this compound included in longest carbon chain? No. There are carbon atoms not included in the chain. And the one which are not included in the chain are substituents. Carbon atom not included in the chain are substituents. तो ये वाले जो carbon atoms है ये chain का part नहीं है. And then they become what? Substituent. तो जो longest carbon chain का part नहीं होते वो वाले carbon atoms क्या होते हैं? हमारे substituents. अगर तो ये second rule है. Carbon atoms not a part of longest carbon chain are substituents. अब किसी भी कंपाउंड में अगर एक से ज्यादा चेन आ रहे हैं, so in case of two equal chains having same number of carbons, then what to do? We have to go for that chain which is having more number of alkyl groups. So if I am having a compound in which there are two different chains possible, and in both the chains same number of carbons are there, then I have to go for that chain which has more alkyl groups.
So the third rule says, in case of two chains, the two equal chains, I should write two different chains having same number of carbon. A chain having more alkyl group, तो मैं इसका एक आपको एग्जांपल भी दे दूंगी. Having more number of alkyl group is selected. Chain having more number of alkyl group is selected. तो पहला पॉइंट था कि we have to go and look out for longest carbon chain. ठीक है, इसी को समझते हैं. तो पहला एक कंपाउंड दिया है, इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सबको समझ में आई. और जो इस चेन का पार्ट नहीं है, जो कार्बन इस चेन के पार्ट नहीं है, उनको हमको क्या कंसिडर करना है? उनको हमको एज अ सब्स्टिट्यूएंट कंसिडर करना है. Okay, is that clear till here? Now, I'm giving you one more compound, and I want you to find a longest carbon chain in this compound. तो ये कंपाउंड दिया है, इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढने की कोशिश करो. इस कंपाउंड में कौन सी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगी? It will start here, then here, then here, and then it will go up to here. और इस चेन में कौन से कार्बन्स इंक्लूड नहीं है? These two carbons and this. तो जो कार्बन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का पार्ट नहीं हो सकते, उसको हम एज अ सब्स्टिट्यूएंट कहेंगे. I'm giving you one more compound now. So I've given you this compound, and let us try finding longest carbon chain.
in the next compound, if I take this as longest carbon chain, which has 1, 2, 3, 4, 5 carbons, how many branches it is touching? 1, 2, and 3. If I take this chain as longest carbon, 1, 2, 3, 4, 5. How many branches it is touching? 1, 2, and 3. And both the branches are same. Or if I take this chain, again having 5 carbons. 1, 2, 3, 4, 5. How many branches it is touching? 3. 1, 2, and 3. तो ये 3 चेन दिख तो रहे हैं, but ये तीनों चेन है. As they are all are having 5 carbons only, they all are touching the same 3 alkyl groups, and there is no difference in position of alkyl group. तो इस केस में any one of this, इसमें से कोई भी एक चेन को हम आसानी से सिलेक्ट कर सकते हैं, and the IUPAC name is not going to change. It is not going to change the IUPAC name of the compound, whether I select chain number 1 or chain number 2 or chain number 3. So 1 is from here to here, 2 is from here to here, and 3 is from here to here. तो ये तीनों में से अगर हम कोई भी एक चेन को लेंगे तो उससे IUPAC नेम नहीं बदलता. So all the 3 are same. So copy this. I'll give you one more example for selection of chains. I'm just clearing these rules that I have written. I try to put more command for chains. Look at this compound. अब इस compound में I don't have same chains, but I'm having different chains with same number of carbons. जो rule 3 लिखवाया था उसके लिए. So you can look at this chain. Chain number 1. How many carbons I see? 1, 2, 3, 4, 5. If I take a chain number 2, how many carbons I see? 5. 1, 2, 3, 4, 5. But you will realize that now the branches are not same. The substituents are not same. And if I take this chain, then this chain and this chain are same. ये दोनों chains exactly same है. तो chain number 2 और chain number 3 same ही. ये दोनों chain same. So now the whole story. So I remove this क्योंकि unnecessarily ये confuse हो रहा है. तो अभी इस compound में हमको 2 chains दिख रहे हैं. दोनों में क्या same है? दोनों में number of carbons same है. दोनों में carbon 5 ही है. So we have to take a call whether we have to go for chain number 1 या chain number 2. And this is where we have to apply rule 3. The rule 3 says
if we are having two different chains with equal number of carbon, तो ये दो अलग chain है with equal number of carbon, we have to select that chain which is touching more number of branches. तो अभी इसमें when I am taking chain number 1, how many branches it is touching? 1 and when I am taking a chain which is chain number 2, how many branches it is touching? It is touching again 1 and another a big branch which is 2. So chain number 1 also is touching 2 branches, or chain number 1 rather is touching 3 branches. तो अगर chain number 1 है तो I have a branch on this carbon, I have a branch on this carbon, and I have a branch on this carbon. So is everybody clear how many branches we are having in chain number 1? Chain number 1 पे 3 branches हैं, और ये जो chain number 2 है, chain number 2 पे एक branch ये है और एक branch ये है. So this is what it is. So what is the rule number 3 says? Select that branch, select that chain which is touching more number of branches. तो इसका naming हमको chain 1 as longest carbon chain select करके लेना है, ना कि chain. तो इसके लिए जो correct chain है वो ये है and not this. The longest carbon chain to be selected for IUPAC nomenclature is chain 1 and not the chain 2. So by giving these examples which you see on the board, I just tried to teach you the first rule. How to look out for longest possible carbon chain. हमने इतना पहले रूल में समझ लिया. अभी अगला रूल, we have to give lower number. अभी नंबरिंग करना है सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए. तो जब भी हम सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए नंबरिंग करते हैं तो उसके लिए हम रूल्स यूज करते हैं. तो देयर आर 2 रूल्स. एक है लोकेंट सम रूल और दूसरा है लोकेंट सेट रूल. मैं दोनों आपको समझा दूंगी और दोनों से हम समझेंगे कि कौन सा रूल कैसे यूज करना होता है और कैसे हमको नंबरिंग करनी होती है. तो रूल नंबर 2 is to number this longest carbon chain. So either it is lowest number rule है या lowest sum rule है. So I'm discussing this. This is actually lowest locant sum. और दूसरा है लोएस्ट लोकेंट सेट रूल. अब ये दोनों के लिए मैं ये सेम एग्जांपल्स कंटिन्यू करती हूँ. तो हमने फॉर एग्जांपल दिस कंपाउंड we have selected a chain. Now what I am trying to explain you is after selecting a chain, how to number for a substituent. 2 possibilities. Either I can start numbering from this end. So my substituent gets number 3. Or I can start numbering from this one. And then my substituent starts getting number 5. तो आपको जो lowest locant है उसको लेना है. अगर एक ही substituent है तो that locant which is giving a lower number to be selected. So I need to select this numbering and not this. As in this numbering, the substituent gets the lower number, that is 3.
we have to go for lower locant number if there is only one substituent. तो अभी ये कंपाउंड रेडी टू नेम है, इसका हमने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट किया है और इसका हमने नंबरिंग भी कर दिया. हाउ डू वी from longest carbon chain, okay, which has, so I remove the other numbering so that there is no confusion. ये दूसरा नंबरिंग में हटा दे. तो अभी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन पे अगर आप ध्यान दोगे तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में आपके टोटली 7 कार्बन है. So when you are having 7 carbons, your root word becomes hep, and everywhere a single bond, so this is heptane. The substituent that I'll write as a prefix is at position 3. So IUPAC name of this will be 3, and this group, this hydrocarbon group is ethane minus 1 hydrogen, so this is ethyl. So name of this is 3-ethyl heptane. And this is what is IUPAC name of this group. So when we are doing the IUPAC name of this group or any compound, when we are naming IUPAC name, always there are some rules while writing that IUPAC name. So what are the rules to write the IUPAC name? The rules to write the IUPAC name is always we put a dash between a number and a letter. And we start the first letter of every IUPAC name with a capital letter. Between two numbers, there will be a comma. And your entire IUPAC name will be without gap. कोई gap उसमें हम नहीं देंगे. So is that clear to you? So these are some basic rules of writing a IUPAC name. Now we go ahead. And we will try understanding numbering for this second. तो इसमें भी हमने कार्बन की चेन सिलेक्ट कर दी. अभी दो ही पॉसिबिलिटी है. I can start numbering from this end. And when I'm starting from this end, my locants, my substituents are at position 3 and at position 5. If I number other way around, my substituents are coming at position 4 and position 6. So with these two methods, I'm having these two sets of locant. दो locant के set मिल गए दो अलग numbering से. Now what is a lowest locant sum rule? Lowest locant sum rule कहता है कि ये locants की add करो, total करो, sum करो, और इसमें जो lower है उसको prefer करो. So you just go on adding the locant, and the one that is lower is selected. Is what is your lower या lowest locant sum rule. What is a lowest locant set rule? दो सेट है मेरे पास, एक 3-5 का locant सेट था और एक 4-6 का locant सेट था. इसमें दोनों सेट के हर एक नंबर को हमको 1:1 कंपेयर करना है. तो 3 here and 4 here. Where there is a point of difference, so here only there is a point of difference, as one is 3 and another is 4. Where there is a point of difference, the one which is lower is preferred. So whether I'm using a lowest locant sum rule, yeah, I'm using a lowest locant set rule, usually the answer comes same. But in some complicated cases, we usually prefer lowest locant set rule, and that's the reason always prefer lowest locant set rule. Locant के दो set बनाइए, 1:1 compare कीजिए. Where there is a point of difference, the one with a lower number
is preferred. Right? So am I clear? For locant sum rule and locant set rule. Locant sum is two or more substituents होंगे, तो नंबरिंग ऐसे कीजिए कि sum of the position of number of substituent और locant is lower. आप substituent को ऐड करने के बाद, locant की पोजीशन को ऐड करने के बाद जो टोटल आ रहा है वो लोअर होना चाहिए. That should be lower. ठीक है, अभी मैं आगे बढ़ती हूँ. तो इसका हमने नंबरिंग डिसाइड किया और नंबरिंग से ये 3 और 5 वाला नंबरिंग हमने प्रेफर. अभी ये दूसरा वाला नंबरिंग मैं हटा देती हूँ एंड फाइनली वी विल ट्राई टू नेम दिस कंपाउंड. So what is the name of this compound? Now this compound has at position 3 a ethyl group and at position 5 a methyl group. इसका word root oct है और ये octane है. So I will start the name. Okay, now I am having two substituents. My one substituent is ethyl and another substituent is methyl. So what shall I write first? The IUPAC says always arrange all your prefixes in an alphabetical order. आपके जो secondary prefixes है उनको आप alphabetical order में arrange कीजिए. So that will put ethyl before methyl. और फिर इसका IUPAC name हो जाएगा 3-ethyl 5-methyl octane. So IUPAC name of this will be 3-ethyl 5-methyl octane. So is this clear here? Now let me go for the next compound. Compound number 3. ये वाला. अब इसमें ये तीनों चेन सेम थे, हमने देख लिया था. तो इसमें से मैं एक ही चेन रखती हूँ, बाकी सब हटा दूँ. फिर हम नंबरिंग पे जाएंगे. चेन नंबर 2 भी हटा दिया मैंने. चेन नंबर 1 क्योंकि एक ही चेन है, कोई अलग चेन्स नहीं. So this is my longest carbon chain. Now let us take a number. तो इसमें numbering with this end, I get a substituent at position 2, position 3 and position 4. And 2 और 4 पे methyl है और 3. So this is which group? This is my isopropyl. So position 3 पे isopropyl. If I number it from this end, the set comes 2, 3, 4, and the groups are also what? Same. तो इस कंपाउंड के लिए दोनों नंबरिंग करेक्ट है, as there is no difference in the groups also and there is no difference in the locant set or locant sum also. So any one of this numbering if we are using, it is correct. अभी ग्रुप्स के नाम, ये 2 और 4 पे मिथाइल है, ये 3 पे जो ग्रुप है इसको अभी मैं आइसोप्रोपाइल या सेक्रोपाइल से नेम कर रही हूँ, बट आगे चल के मैं इसका भी, इस ग्रुप का भी आपको IUPAC नोमेनक्लेचर सिखा दूँ. तो ये प्रोपाइल हो गया, ये मिथाइल हो गया. व्हाट विल बी अल्फाबेटिकली प्रेफर्ड? मिथाइल. So we name this as 2,4 dimethyl 3 isopropyl pentane. And this is a IUPAC name of this compound.
So let me go ahead and finish this one, the last one on the board. तो इसमें हमने chain decide कर ली थी, chain number 1. The chain that is touching more number of branches is selected, right? तो ये जो chain number 1 है, it has 3 branches. And numbering now. तो इसमें भी अगर आप देखोगे, so this way is 2, 3, 4, and if I come this way, it is 2, 3, 4. So both the numberings are correct, and I can name this compound as, this is now methyl and this is ethyl. So I'm writing dimethyl. ये जो डाई होता है ना, मल्टीप्लाइंग प्रीफिक्स होता है ना, इसका डी we never consider for alphabetical preference. Alphabetical preference के लिए multiplying prefixes को हम नहीं consider करते. Okay, multiplying prefixes को नहीं consider करना है, main group को ही देखना है. तो 2 और 4 पोजीशन पे मिथाइल है और 3 पे इथाइल है. तो नेम ऑफ दिस कंपाउंड is going to be 3-ethyl will come first, and then it will be 2,4 dimethyl pentane. So this is the IUPAC. I'm just giving you one simple compound for this alphabetical order, and then we can go ahead. तो और एक simple compound में दे रही हूँ for alphabetical order. I'm clearing this. ये 4 compound हो गया. Compound number 4 we named it here. 5 I'm writing. Okay. So I've given you this compound. There is no issue with the chain. The chain is the straight longest carbon chain that you see. Now, let us understand numbering the chain. So if I'm numbering from this end, the locant at position 3 and 5. And if I'm numbering from another end, the locant position is same. But both the numberings are not correct. So what is the rule here? The rule says try to give lower number to that locant, to that substituent which is alphabetically preferred. तो अभी हमको उस substituent को lower number देने की कोशिश करनी है, which is alphabetically preferred. Methyl और ethyl में what is alphabetically preferred? Methyl and ethyl में ethyl is alphabetically preferred, and we have to select that numbering which is giving lower number to ethyl. And that's the reason I have to use this numbering. So it becomes 3-ethyl and 5-methyl is the correct name, and not 3-methyl and 5-ethyl. तो ये अल्फाबेटिकल वाला रूल समझ में आया, बट ये रूल हम कभी यूज करेंगे जब भी दोनों एंड से जो लोकेंट का सेट आ रहा है वो सेम है. When the locant set is same, when the groups are same, then you have to go for alphabetical order, and you try to give lower locant to that group which is alphabetically preferred.
So final name of this compound becomes 3-ethyl 5-ethyl heptane. Okay, so we have discussed some basic rules of finding the longest carbon chain. We have discussed some basic rules of numbering a longest carbon chain. And I also discussed with you alphabetical order. तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मल्टीप्लाइंग प्रीफिक्स को कंसीडर नहीं करना है. डू नॉट कंसीडर मल्टीप्लाइंग प्रीफिक्स फॉर अल्फाबेटिकल ऑर्डर. और क्या रूल कहा मैंने, अगर आपका नंबरिंग दो अलग ग्रुप के लिए सेम आ रहा है तो ट्राई टू गिव लोअर नंबर टू दैट ग्रुप व्हिच इज अल्फाबेटिकली प्रीफर्ड. जो अल्फाबेटिकली प्रीफर्ड है उसको लोअर नंबर देने की कोशिश करो. तो इतना कॉपी कीजिए. आई गो अहेड. ओके, सो व्हाट नेक्स्ट. तो नॉर्मल अल्केन का नॉमेनक्लेचर हमने कर लिया. अभी आई विल डू नॉमेनक्लेचर नेमिंग अ अल्केन विद अ कॉम्प्लेक्स ग्रुप. तो पहले समझते हैं कॉम्प्लेक्स ग्रुप किसको कहते हैं. ओके, और फिर कॉम्प्लेक्स ग्रुप वाले अल्केन को कैसे नेम करेंगे. ऑल दिस वी विल सी.
So the rules that we are doing are for naming a complex group. तो सबसे पहले समझेंगे what is naming a complex group. एक कंपाउंड दे देती हूँ बड़ा सा, तो ये इथाइल मिथाइल जो मैं लिख रही हूँ ये बिल्कुल कॉम्प्लेक्स ग्रुप नहीं. What is a complex group? A complex group is that जिसमें there is a branching present. तो इस ग्रुप के अंदर ब्रांचिंग, तो जिस ग्रुप के अंदर ब्रांचिंग होती है उसको हम कॉम्प्लेक्स ग्रुप कहते हैं. दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड. तो ये मैंने एक कंपाउंड दिया है, ये अल्केन है, ओके, और इसमें मुझे अभी नेम करना. लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में कोई गड़बड़ नहीं है, नंबरिंग के रूल्स भी हो गए. अभी इसमें जो स्पेशल रूल हम सीखेंगे इज फॉर नेमिंग दिस. इसको हम ब्यूटाइल नहीं कह सकते, ये पहला पार्ट समझो. इसको हम ब्यूटाइल क्यों नहीं कह सकते? When this will be called as butyl. Had there been 4 carbons in straight chain, ये चारों कार्बन अगर स्ट्रेट चेन में होते तो हम इसको आसानी से ब्यूटाइल कह सकते. But when it is not in straight chain, I cannot call this as butyl. कॉमन नेम अगर मुझे यूज करना है तो मैंने ऑलरेडी हाइड्रोकार्बन ग्रुप में आपको ये ग्रुप एज टर्शियरी ब्यूटाइल सिखाया था, अगर आपको याद है तो हम इस ग्रुप को टर्शियरी ब्यूटाइल कह सकते हैं. बट टर्शियरी ब्यूटाइल इज नॉट द IUPAC. सो आई विल टीच यू हाउ टू नेम दिस ग्रुप, दिस कॉम्प्लेक्स ग्रुप इन IUPAC. तो पहले इस ग्रुप का नेमिंग समझते हैं. तो ये कॉम्प्लेक्स ग्रुप है और हम इस कॉम्प्लेक्स ग्रुप को अभी IUPAC में नेम. तो जब भी किसी ग्रुप को आप IUPAC में नेम करते हो तो उसका जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट वाला कार्बन होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है. 2 चीजें, उसी से नंबरिंग स्टार्ट होगा और उसी से हमको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को भी फाइंड आउट करना. तो ये कार्बन से जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट? वेयर फ्रॉम वेयर दैट ग्रुप इज अटैच्ड टू मेन फ्रेम. तो ये जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट वाला कार्बन है इससे आई हैव टू गो फॉर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन. सो वेदर आई गो दिस वे or I go this way or I go this way, there are only 2 carbon present, so any one of this. So I select this as my longest carbon chain. Numbering के बाद जो point of attachment वाला है वो 1 है और फिर ये 2. तो ये जो मेरी ब्रांच है ये 2 कार्बन अल्काइल ग्रुप की ब्रांच है. So what is a 2 carbon alkyl group? Ethyl. So this complex group is a derivative of ethyl और जिसके कार्बन नंबर 1 पे 2 substituents है and both these substituents are methyl. So I will write the name as 1,1 dimethyl ethyl. And this is a IUPAC name for this complex branch. अभी इसमें जो ये 1, 2 है इसको हम 1 prime और 2 prime लिखेंगे. So why I am using 1 prime and 2 prime? Because 1, 2, 3, 4 I will use to number my main chain. तो देखो मैं फिर से बता रही हूँ क्या क्या किया. जो point of attachment है
उस कार्बन से हमने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट की. We named that carbon, we numbered that carbon as 1 and another as 2. On this carbon there are 2 branches, both the branches are of methyl, and my main branch is ethyl. So name of this compound, name of this complex branch becomes 1' 1' dimethyl ethyl. Now this is the name of the complex branch, which we will incorporate in the naming, and we will try to give a IUPAC name for this compound. Abhi next is numbering. I will try to number so that I get a lower local set. That will be numbering from this set. So I am having locants. तो लोकन कहाँ पे है? लोकन कार्बन नंबर 3 पे इथाइल है, 4 और 7 पे डाइमिथाइल है, और ये डाइमिथाइल इथाइल है. Now the next job is I have to understand alphabetical preference. तो मुझे किस किस में अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस लगाना है? एक ये कॉम्प्लेक्स ग्रुप का नाम है, दूसरा है इथाइल और डाइमिथाइल. जब भी आपका नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट होता है, तो नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट के लिए मैंने आपको ऑलरेडी कहा था कि आपको मल्टीप्लाइंग प्रीफिक्स डाई को अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस में नहीं लेना है. But when it is a complex group, we do consider a multiplying prefix for alphabetical preference. Complex group का जो multiplying prefix होता है, उसको हम alphabetical preference में consider करते हैं, और जो normal group होता है, उसका multiplying prefix alphabetical preference में prefer नहीं करते. So that tells us कि इथाइल और ये वाले दो डाइमिथाइल में इथाइल is preferred, but ethyl and in this complex group alphabetically we will prefer this complex group, and then I start naming it. So first will come this complex group which is on carbon number 4. तो कार्बन नंबर 4 पे जो भी कॉम्प्लेक्स ग्रुप है उसको हमको ब्रैकेट में लिखना है. तो 4-1'1', the first letter is capital, dimethyl ethyl. Then इसके बाद में नेक्स्ट अल्फाबेटिकली आएगा इथाइल, तो दैट इज एट कार्बन नंबर 3. Then it is 3-ethyl, and then 4,7 dimethyl. So I have taken care of all the substituents. अभी बस मुझे रूट वर्ड और प्राइमरी सफिक्स लिखना है. तो 10 कार्बन का रूट वर्ड हो गया डेक और प्राइमरी सफिक्स हो गया ए. So this is ending with deck A. So is this complex group naming clear to you? I'll try to give you one more compound. Let us name one more compound with the complex group, और एक हम complex group वाला compound name करने की कोशिश करेंगे. So I'm clearing this. So see, next compound.
ये एक मैंने कॉम्प्लेक्स ग्रुप आपको देने की कोशिश की है यहाँ पे, and I'll complete this compound. Okay, so this is the compound given, and we will try and understand naming this compound in IUPAC. तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में कहीं से भी कंफ्यूजन नहीं है. So if I take this chain 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. If I take this chain 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And if I take the straight chain, which is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So no doubt that my longest carbon chain is the straight one that we can see. Numbering में भी कोई डाउट नहीं, क्योंकि आपका लोअर लूप एंड यहीं से आएगा. इस कंपाउंड में कार्बन नंबर 2 और 7 पे मिथाइल ग्रुप है, और नाउ हियर कम्स कार्बन नंबर 5 पे एक कॉम्प्लेक्स ग्रुप है. एंड वी विल यूज द नेमिंग फॉर अ कॉम्प्लेक्स ग्रुप. हम कॉम्प्लेक्स ग्रुप का अभी नेमिंग समझेंगे विद द रूल्स दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड. तो हम पॉइंट ऑफ अटैचमेंट वाले कार्बन से स्टार्ट करके इस कॉम्प्लेक्स ग्रुप में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, which has 3 carbons. When I number it, I always have to give number 1 here. So this is 1 prime, this is 2 prime, and this is 3 prime. So this complex group is a propyl, which has on carbon number 1 methyl. So name of this complex group will be 1 prime methyl propyl. बस अभी इसके आगे मुझे क्या करना है, मुझे इसके आगे इसको अल्फाबेटिकली अरेंज करना है. So when I am alphabetically arranging, there is a methyl and there is 1 methyl propyl. What will be alphabetically preferred? The methyl group. Okay, so name of this compound will start with 2,7 dimethyl. On carbon number 5, there is 1 prime methyl propyl. So we have taken care of all the branches, and now we will end with word root and primary suffix. तो word root आ जाएगा 9 कार्बन का नॉन एंड एवरीवेयर सिंगल बॉन्ड, तो ये हो गया नॉन मील. So is that clear? Right? So this is where we have completed till naming a saturated hydrocarbon. मैंने अल्केन का नेमिंग आपको समझा दिया, और अल्केन विद कॉम्प्लेक्स ग्रुप के नेमिंग के रूल्स भी आपको मैंने थोड़े बहुत समझा दिए. राइट? अभी इसके आगे अगले लेक्चर हम क्या करेंगे, इसी की थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, एंड देन वी विल स्टार्ट नेमिंग alkene and then alkyne and then all the other functional groups. Okay, so IUPAC nomenclature has just begun with some basic alkane name today. So that's it for today's lecture. See you next time. Bye everyone.